Dr. Rao holds a PhD centered on the legendary theatre director B.V. Karan's works, along with a doctorate of literature in new direction theories and theatre practices in India. Over his career, he has received numerous distinguished honors, including the Manohar Singh Samman in 2006, Mohan Rakesh Samman in 2015, Central Sangeet Natak Academy Award for Direction in 2016, Fulbright Fellowship 2018-19, B.V. Karand Award 2019, and Oxford Art Book Award 2023. An innovative scholar, Dr. Rao has authored several influential works in contemporary Indian theatre, including On the Crossroads of Theatre, Scenography, An Indian Perspective, Animal Farm, an ODI adaptation of Orwell's novel, Penguin Publication, and many more. Dr. Rao has been a professor and head of the department at Theatre Arts at the University of Hyderabad till 2023. He, after his retirement, has founded the School of Performance Arts and Creative Expression Space Academy in Bhubaneswar. Here he mentors aspiring students and pursues dynamic creative projects, fostering the next generation of theatre artists. Today he is going to give a lecture on Indian scenography. Welcome again, and sir, please. I invite sir for his lecture. सब्जेक्ट को आप जानते नहीं हो उसमें नर्वसनेस होने की जरूरत नहीं, इसकी गहराई में जाने वाला नर्वसनेस बढ़ जाता है। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। पहली बात तो सिनेमोग्राफी अपने आप में बड़ा इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल। हमारे हिंदुस्तान में मेरी आवाज समझ रहे हैं कि माइक्रोफोन बड़ा बढ़ती मुझे खुद गुना स्वामी को सुना जा रहा है। Thank you very much for coming here to listen to me. Very boring subject. And from the beginning I tell you, it's literally very boring subject. And to sit here for 1 hour or more than 1 hour, maybe please bear with me. बहुत साल से ही bear कर रहा हूँ subject. सिनेमोग्राफी में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देके देना माय टॉपिक। ये टर्म अपने आप में बहुत एक डायरेक्टिकल टर्म है। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि वर्ड वाइड है, कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे अमेरिका में ये टर्म बोलोगे तो बोलेंगे रास्ता। मैं 1.5 साल वहां था तो मैं चुपचाप बोला कैसे लिख दिया एंड दे एक्सेप्ट इट। यूरोप में if you are a cinematographer, you will get the maximum benefit out of this term, because this term is been derived in European countries. क्योंकि Latin से है Greek का cinematography. It's not set design, it's not lighting design, it's not costume design, it's not property of mask design, it's not actors body imaging. Choreography ये है क्या ये? मैं in only in 90s, I think 95 के बाद ये टर्म थोड़ा सा हिंदुस्तान में पॉप होने लगा था। वो भी मैं पहली बार ये टर्म सुना था निसार आराना सर से, my guru. Out of it, very few people under whom I have learned, who influenced me, Professor Nisar Arana, Dr. Nisar Arana is one among them. तो उन्होंने ये टर्म कहा था क्योंकि एक प्राग में एक क्वाड्रेंगल होता है, डिजाइन क्वाड्रेंगल, पॉलिटिशियंस होते हैं, वहाँ के बहुत सारे डिजाइनर्स इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ ये टर्म उन्होंने शायद सुन के आए थे हिंदुस्तान। ये मेरे ख्याल से 94-95 की बात होगी। तभी वो क्लियरली नहीं समझा पाए क्या है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको पहली बार ये टर्म को यूज किया, ऑफिशियली एक पोस्ट निकाला, प्रोफेसर सिनोग्राफी। उनको खुद को नहीं पता था ये क्या है।
and I luckily or जो भी I joined in that post, मैंने भी ब्लॉगिंग किया था स्टेनोग्राफर। अब आज पब्लिश करने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उस समय नौकरी के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। So I admitted into, I joined in the post of the stenographer. I didn't know this subject. So I started plundering internet, net, ये वो, क्या है, मीनिंग क्या है, बहुत ही लिटरल मीनिंग बहुत जगह पे निकाल रहा है। I found on website, ये 2011 के आसपास का समय था, मैंने वेबसाइट में एक प्रोफेसर पामेला हावर्ड स्टेनोग्राफर के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा, सुना, उनकी साइट देखा, तो वो सी इज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सी हिमसेल्फ इज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड ऑपेरा डायरेक्टर, सी यूज्ड टू डायरेक्ट ऑपेरा एंड बेसिकली आर्ट स्कूल की स्टूडेंट है, लंदन स्कूल ऑफ आर्ट से पास की है, बहुत बिल्कुल रेडी, अभी उनका 90 ईयर एज हो गया अभी आज की डेट से। 2011 में जब उनके बारे में मैंने पता चला 70-80 साल की हो गई, सो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की। फिर मैंने उनसे ना एक ईमेल करस्पॉन्डेंस की, ऐसे तुक्का मारा, तो थोड़ा जानने की इच्छा था, तो नहीं तो क्या है कि झूठा साबित हो जाता पूरी जीवन। तो मैं जिस काम के लिए हैदराबाद में हूँ उसको तो जस्टिफाई करना पड़ेगा किसी तरीके से। मैं स्टूडेंट्स को वही डिजाइन पढ़ा रहा हूँ और कह रहा हूँ से तो गलत हो जाएगा। मैं प्रोफेसर पामेला हावर्ड से कांटेक्ट किए, उन्होंने मुझे लंदन बुलाया एंड मेरे लिए एक बहाना मिला। आप जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं, ऊपर वाला मदद कर लेता है। सो सडनली विद इन दैट ईयर, 2012 में मुझे ऐसे ही मेल मिला कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स में इंडियन थिएटर पढ़ाने के लिए एडमिशन आया। ये ऊपर में शायद जिसने हमें बनाया है वो ये सारी चीजें टारगेट कर रहा है। सो आई वेंट फॉर 6 मंथ में हमारी यूनिवर्सिटी से लीव लेके विदाउट सैलरी, क्योंकि वहां पर मुझे मिल रहा था, तो मैं चला गया पढ़ाने के लिए। वहां पर ईस्ट 15 एक्टिंग स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, तो वहां पर मैं गया। तो मैं गया, बहाना था, मैं पामेला हावर्ड से के मैडम के साथ मिला, बातचीत हुई और उन्होंने एक ओपेरा में जब कर रहा था उसमें मुझे असिस्ट करने के लिए एक चांस दिए। सो मैं 2 घंटा क्लासेस करता था और आके मैडम का घर पे, तो मैं अल्टीमेटली उनकी घर पे ही रहने लगा। तब मुझे जो अनुभूति हुई वो अद्भुत था, वो स्वर्गीय था। हमारी पूरी सोच का बदलाव होता है। सिनेमोग्राफी हम जो कहते हैं डिजाइन, इट्स नॉट एग्जैक्टली डिजाइन, इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइनिंग, इट्स एन हाउ ऑडियंस गेटिंग आउट ऑफ इट, उससे दर्शक को क्या मिल रहा है, टोटल विजुअल एक्सपीरियंस। इसमें एक्टर्स भी आ जाता है, एक्टर्स की मूवमेंट भी आ जाता है, कॉस्ट्यूम्स, लाइट्स, सेट, एवरीथिंग। सो पामेला हावर्ड की किताब उन्होंने मुझे दिया, दैट इज द फर्स्ट एवर बुक ऑन इंडियन ऑन सिनेमोग्राफी। वो किताब का नाम है व्हाट इज सिनेमोग्राफी। ये है 2004 में पब्लिकेशन हुआ था, पब्लिकेशन 2009 में सेकंड एडिशन हुआ। सो वो किताब उन्होंने मुझे कई जगह पे समझाया, मैंने पढ़ा, पूरा पढ़ा वो किताब। अब मुझे समझ में आया ये सब्जेक्ट क्या है। इट्स ए टोटल विजुअल लेक्सिकन ऑफ द स्पेस। टोटल विजुअल लेक्सिकन की बात मतलब जिसमें जो भी आंखों के सामने होता है उसमें ऑडियंस भी शामिल है, वो भी आंखों के सामने होता है। तो विजुअल एक्सपीरियंस इज ultimate. That means it's not creating a set, it is how in the space a set is being constructed and how an actor handle it and what experience audience is getting. In totality में मैंने भी पूछा कि ये तो डायरेक्टर का जॉब है, और yes, you are a director, you are a designer and you are the actor also. स्पेस में जो एलिमेंट जो डिजाइन में लाइट्स है, कॉस्ट्यूम से मेजर डिजाइनिंग एलिमेंट्स में कॉस्ट्यूम होता है, लाइट्स होता है, सेट होता है और एक्टर्स होते हैं। पार्टी प्रॉपर्टीज मास्क वगैरह तो हो ही जाते हैं इसी साथ। ये सारी चीजें एक्टर को एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, जो लिविंग एलिमेंट है वो स्पेस के है। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है।
सेट डिजाइनर को अगर पूछा जाए, जो सेट डिजाइनर सेट बनाते हैं, वो बोलेंगे कि हाउ इज सेट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। वो उसका मॉडल बनाएगा और उसका ग्राउंड प्लान तैयार करेंगे, उसका एलिवेशन ड्राइंग्स बनाएंगे, मैकेनिकल ड्राइंग्स बनाएंगे, वो कारपेंटरी का काम कारपेंटर को हैंडओवर करेंगे। तो हमारी प्रोसेस होती है एंड कारपेंटर उसको स्टेज पे लगाने के बाद उसका काम हो जाता है खत्म। बट सिनेमोग्राफर का काम वहीं से शुरू होता है, वहां से शुरू होता है कि किस तरीके से ये स्पेस आर्टिकुलेट करेगा, जिसको आप पामेला मैडम ने नाम दिया है विजुअल डायलॉग। ए डायलॉग that is not been audible but it is visible through eyes, like a painting. When we see a painting, the painting talks with us. वो एक वार्तालाप चल रहा है। इसी तरीके से अगर स्पेस में एक रूइन है, फॉर एग्जाम्पल एक टूटा हुआ बिल्डिंग है और हमारे नाटक का सेट है, that creates that a dialogue with us, why I am here, what in which condition I am here। उसके साथ जो एक्टर उस स्पेस को इनहैबिट करता है, उसके साथ मेरा संबंध क्या है। तो मेनली एक्टर, ऑडियंस एंड स्पेस की एक रिश्ता है, दैट इज सिनेमोग्राफी। यहां तक तो समझ में आ गया। इसके साथ इतने साल काम करने के बाद मैंने देखा हमारी भारतीय परंपरा में रंगमंच शून्य है। हमारे यहाँ पर एम्प्टी स्पेस की बात कही गई है, नाट्यशास्त्र में स्पेस इज एम्प्टी। फिर मुझे लगा काम करते करते लगा इज इट एम्प्टी और इट्स बीइंग फिल्ड एवरी टाइम बाय इमेजिनेशन, ऑडियंस इमेजिनेशन। हाउ ऑडियंस इमेजिन थ्रू आवर जेस्चर्स, पोस्चर्स, बिहेवियर, हाउ वी इंटरैक्ट विद स्पेस, उसे ऑडियंस से इमेजिन कर लेता है। तो एक मेरे दिमाग में कुछ एक चीजें घूमने लगा। मैंने एक कांसेप्ट, it's in a very rudimentary stage, I'm telling you. I'm working on it. I may be wrong, I may be right, I don't know, but I'm working on it. I'm working on indicative space. तो मैंने एक डेवलप किया ट्रायडिक ऑफ आईज, आई इंग्लिश आई, तीन आई का समाहार, ट्रायडिक्स ऑफ आईज। वन इज इमेज, अनदर इज इमेजिनेशन, थर्ड इज इंटरप्रिटेशन। स्पेस जो स्पेस पे कर रहे हैं, अगर हमारी इसका टॉपिक का नाम है इंडिक इमेजिनेशन। इंडिक इट्स नॉट इंडिया। इंडिक हमारी रीति है, हमारी वैदिक पारंपरिक हमारी जो रीति है, उसमें हमने स्पेस एंड आकाश को किस कंसेप्ट कर लिया। हमारे यहाँ पर आकाश का कंसेप्ट है। आकाश होता है तैत्तिरीय उपनिषद में, आकाश मींस द स्पेस जिसमें दैट एवरीथिंग अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स। सारी चीजें वहीं से आता है और वहीं डिसअपीयर हो जाता है। सूर्य चंद्र डिसअपीयर हो जाते हैं, दिन आता है, रात आता है। तो एक क्षण भर के लिए, एक खास समय के लिए वो वहां पर होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस। ये जो प्रेजेंस है ये थ्रू आउट नहीं होता। 24 घंटा सूर्य नहीं चमकता, 24 घंटे तारे नहीं दिखाई देते। एक खास जब एक बिजली कड़कती है, फ्लैश ऑफ सेकंड के लिए क्लिक करता है, लाइटनिंग हो जाता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, बट यहाँ पर वो रजिस्टर करता है। सो यहाँ से हमने डेवलप आइडियाज लिए कि हमारी ये जो स्पेस है ये इट्स लाइक ए कंटेनर, जो हमारे नाट्यशास्त्र में एंटायर स्पेस के कंटेनर, एक्टर के कंटेनर। पात्र में कोई भी चीज रखो तो थोड़ी देर के लिए उसका अनुरूप बन जाता है। उसका रूप नहीं, मैं कह रहा हूं अनुरूप। हम अगर मंच पर रथ में जा रहे हैं, रथ तो नहीं होगा, और हमारी चाल, ढाल, मूवमेंट, मैडम यहाँ बैठी हुई है, हमारी कोरियोग्राफी जो है वो सारी चीजें रथ का आभास देता है। दैट इज अनुरूप, दैट इज नॉट रूप। ये अनुरूप या उसकी पैरेलल कुछ हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट इमेज है, हमारी इंडियन नाट्यशास्त्र में, हमारी डांस ट्रेडिशन में, हमारी फोक में, हमारी कथकली या हमारी कोरियोग्राफी नाट्य परंपरा में जो है, उसको मैंने उभारने की कोशिश की। सो एक इंडिकेटिव स्पेस जो कि थोड़ा सा, मैं कहता हूं चांद है और ऑडियंस को चांद दिखाई देता है, बट फॉर दैट आई हैव टू क्रिएट एन इंडिकेशन। एक या फिर ये नहीं हो तो कुछ और ही सही, थोड़ा सा इंडिकेट करने से दर्शक को चांद उसकी इमेजिनेशन में दिखाई देगा, क्योंकि वो चांद कहां है, अपने लाइफ फोर्स से वो ड्रॉ करेगा उस इमेज
वहां वो मीनिंग उसका अंदर ढूंढेगा, मीनिंग इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, फिर उसको रस निष्पत्ति होती है। तो ये जो स्टेज वाइज जो है उसी को मैंने कहा इंडियन इमेजिनेशन, Indian scenography. So in this Indian scenography, कई लोगों ने मुझे कहा, मैंने बहुत से लोगों से बात की, बहुत लोगों से पूछा, विदेश में भी इसके ऊपर बात हुई, अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं है पर हमारे इंडियंस को दिक्कत हो गई, व्हाई इंडियन सिनेमोग्राफी, सिनेमोग्राफी तो सिनेमोग्राफी, व्हाई इंडियन सिनेमोग्राफी। तो कुछ लोगों ने, many people have said that is it the work that is going on nowadays in in scenographic work, do you call that Indian scenography? No, not at all. Indian scenography can be practiced in America or Europe or in Africa, no problem. पीटर ब्रूक इसका ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किए, शेक्सपियर भी इसी का ऊपर काम करते। तो that means those who use the concept is Indic imagination. That I turned Indian scenography, I don't know, I may be wrong or right, and it doesn't matter, गलती हो जाएगा। So let us थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल है और बिल्कुल न्यू है ये टॉपिक। अभी हम लोग हिंदुस्तान में, जबकि हमारे ट्रेडिशन में बहुत पुराना है, और नए परंपरा में इन न्यू younger generation, हमारी जो new generations has not been yet discovered that. Let us find it out. If you find something pertinent, please tell me so that I can rectify my things. So reclaiming an Indian vocabulary of space. The vocabulary of modern scenography has largely emerged from European thought, from architectural logic, pictorial realism, and the mechanical art of set design. Yet, when we return to India's theatrical traditions, from the Natyasastra to Kudiyattam, Yakshagan, Ramlila, we realize that our imagination of space did not begin with architecture. It starts with our consciousness. In India, the stage was never a framed picture like a proceeding, but it's a living field which is called Ranga, the space of vibration and emotional exchange. Here, performance was not built around illusion, but it reveals revelation. हमारे यहाँ पर illusion भ्रम में हम नहीं डालते। We never create an illusionistic theater. Europeans, they have created illusionistic theater. So that is why they go for representational style. So they try to proxy the world what they are feeling. But here we don't proxy the world. We imagine that in our own way, and so that is called revelation. We reveal a new thing out of it. This is a spiritual act of seeing, which is called darshan. A spiritual act of seeing. In Sanskrit, darshan refers to auspicious sight, the opening of the eyes, mainly both to see and to realize. When we create a deity, आंखें बाद सबसे लास्ट में चक्षु को खुला जाता है. Once the eye opens, she so sees the world, or sees the world. Then we see, then he must see. So both the way, it is always vice versa. That is called darshana. When I look at this microphone is watching to me. If I realize this, then and there only Indian cinema starts. Then how I handle it? Complete perspective will change. So this is called darshana. To see, to realize, which means the artist did not merely show but unveiled the hidden parts beneath the visibility. Our contemporary notion of scenography must therefore be decolonized, freed from Western model of set design, lighting design, costume design, and re-rooted in the Indic imagination. And should be re-rooted in Indic imagination.
The Indic space must not a container for performance. It's a medium of awareness. This is not a rejection of modernity, but a reminder that in India, aesthetics and metaphysics go together. The artists, actors, musicians, dancers, and painters were the seekers. They were always in search of something which they did not know. Something is always in search of something, engaged in constant dialogue between the material and the metaphysical. To understand Indian scenography, we must move beyond the craft to conscious design. The craft is जो चक्कर, मतलब we generally when we call up say lights, we always fell into the trap of that craft, technology. But we have to leave it. We have to leave it and go further to find the पीछे philosophy क्या है, concept क्या है. The design must breathe, listen, and reveal. The Indic imagination does not decorate space. It doesn't decorate the space. It consecrates it. उसको sanctify करता है. Through this consecration, the act of staging becomes a ritual of awareness, a moment of alignment between performer, space, and spectator. Space, performer, and spectator. In this vision, the Indian stage perceives space as dynamic consciousness, not something to be filled, but something to be awakened. Every design element may be a simple lamp, a fabric, a trace of sound, whatever that participates in this awakening. The scenographer's task is not to impose, but to listen until the space reveals its rhythm. मैं यहाँ पे बात कहना चाहूँगा कि भाई generally what we do as a designer, directors, we impose things in the space without listening to the space. Space it has a definite rhythm, it has a vibration. हर उस space का एक अलग sound. And when audience come and say that it has a different sound. तो बहुत सुनना, कान खोल के सुनना बहुत, then only the space will start listening to you, talking to you. Automatically the things will start. उसके लिए force करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. The actor then enters not to occupy the stage, but to resonate within it. Indian scenography emerges from the Indic imagination rather than imposed visual paradigm. It maps the inner architecture of Indian stage, a structure not of wood and cloth, but of perception, vibration, and awareness. So I am now talking about 5 elements which I identified. 5 factors responsible to create Indic design. Number 1, this unfolds 5 interwoven visions. Number 1, ashramic vision. ये हमारी religion से हमने लिया है. Ashram, theater as conscious dwelling. We dwell only. We don't live here. We dwell for a particular time here. A field of tapasya. It's called Riddhi, R-I-T, Riddhi, cosmic order. उसको follow करता हुआ हम कुछ समय for a particular time when we are here. The character is here. Like for example, Naridas का पात्र for a particular time phase, a kind of emotion is inside. After that, it will be drained out. Something different will come. So in Indian theatre, nothing is carried out, not like Shakespeare. अगर आप if you are doing Macbeth character, you have to be Macbeth from beginning to the end. But in our concept, for a particular time period, I am doing the role of Dushyanta or something else. In the next moment, I will be Sukrala. Third moment, I will be an audience watching. So this transformation, that is why we need a pure body, sanctified body and voice, not proper characterizations. कोई जरूरी नहीं, it's not essential to do costumes, makeup properly, but it must indicate to that which we are doing.
So that I call asthenic vision. Second is patra bhava. Patra, the container of the vessel, consists of an actor and object become temporary bearer of meaning. Temporary. Third is the sonic and scenic vision. Sonic means sound. Scenic is visual. Very interestingly, today morning session, Mrs. Kaur, she talked about sound in space, how space is created out of sound. And I have taken the same thing coincidentally. Sound and space as vibration, exemplifying the works of Vivekananda, Bansi Kaur and Ratan here. Then indicative space. The Indian states are suggestive, porous and open-ended. हमारे यहाँ पर कोई कंक्रीट चीज नहीं है, हमारे यहाँ पर porous, light, हल्का, delicate, soft, tender, ये सारी चीजें हम that is applicable to Indian theatre. ये सारे भाव उसकी सिनेमोग्राफी में होना is important. Revealing rather than representing. Through these 5 visions, Indian cinematography explores visual compositions as a philosophy of seeing, a poetic of emptiness and resonance. In this concept, cinematography ceases to be background of performance. Now, if with these qualities, it cannot become a background. Just पीछे पड़ा रहेगा या आपके पैरों के नीचे लकड़ी की तरह प्लेटफॉर्म पड़े हो, no. It outrightly rejects it. It breathes with the audience. And becomes the breath of theatre itself. Actor, space, light, sound, costume, properties, audience. And audience imagination form one ecosystem, one organic ecosystem. That is the ecosystem of consciousness. To reclaim this understanding is to reimagine theatre not as representation but as revelation. The Indian stage does not imitate reality. It discloses essence, उसकी खुशबू देता है. That type of indication. फूल ना दिखाए तो उसकी सुरभि, उसकी स्मेल हम तक पहुंचाता है, हम खुद देख लेंगे. आप jasmine, if we give a smell of jasmine, you will not say that it's mogra or it is something else, because we have that experience in our life. We just connect that with our consciousness. Then everything is visible. So फूल दिखाने की क्या जरूरत है? फालतू में पैसा खर्च करें. Wastage of money creating such woodwork on stage को. For theatre there is no money and wasting money on this wooden carpentry work. It's meaningless and useless. Simply useless. So this is the foundation of which Indian cinematography rests. Where space becomes consciousness, material becomes vibration, theatre becomes an offering. पूजा हो जाता है. The asthenic field, the theatre as dwelling. In the Indic imagination, space is never empty. Though in physically or outside it looks empty, but it's not at all empty. It breathes, it vibrates with the rhythm of the cosmic order that operates all movement and stillness. Theatre in this light is not a site of performance, but a field of dwelling, a place for tapasya, where actor, designer, spectators, directors share the same pulse of becoming. The word ashram means not to retreat, but to be with the rhythm of the space. That I call spatial rhythm. Painters, they know how a space is being divided into various rhythms. स्पीच के जैसे डायलॉग्स की अपनी रिदम होती है, म्यूजिक की ताल और लय होती है, एक स्पेस का अपनी ताल और लय होती है, एक रैप का अलग लय है, एक स्टेप्स it has a different rhythm, a pillar has a different rhythm. So वो समझना बहुत जरूरी है. बनाना तो बनाने के लिए कारपेंटर पर बैठे हुए बना दे. So understanding becomes important. So theatre in this light is not a site of performance, it's a field of dwelling, a tapasya, where actor, director, designer, spectator share the same pulse of becoming. The word ashram evokes not retreat, but being the rhythm. Life's fourfold cycle of brahmacharya, grahastha, vanprastha and moksha.
theatre too moves through such cycle. Natak being, if you see it through an inner eye, you can understand how a play starts from the beginning, from the childhood it starts. And last को हमारी ओडिसी में तो मोक्ष है ही, in Odissi dance, the last is moksha. And in every dance form they have the same thing in different names. In theatre में बहुत के end, salvation, मिलन, finish. तो मिलन से प्रेमिक प्रेमिका का मिलन नहीं होगा, वहाँ पर आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, end होता है. So the stage becomes an ashrama where the artist enters into a sacred economy of action. Every gesture, sound, form on stage is born out of awareness and carried through discipline. This activity is not decorative but ethical. It binds art to life through mindfulness. Discipline, breath and threshold. So it's very important, discipline we all know, breath, you know, what is threshold? Darwaja. This is a threshold. Udhar aur idhar ke beech ka, there is a entry gate. So the Natyasastra stated within this cosmological framework. When Brahma creates Natya Veda, it is not to entertain but to restore balance among human beings. गलत रास्ते में जा रहा था हमारे, we all know that how through theatre we became human beings, through Natya, not theatre, through art we become human beings. If there is no art, can we imagine a world? We can't imagine it. We all become demons. So to balance among human beings, to re-establish wreath in the society through plays, the stage thus become a microcosm, an astronomic laboratory where energies are purified through repetition and form. The actor's body becomes the locus of this alchemy. His breath regulates, his movement born of inner stillness. He embodies the tapas dharma not as a self-denial but as a discipline of luminous focus. In traditional Indian performances, let's say Kudiyattam, Kuchipudi, Yakshigan, Odissi, Chau, Telugutu, Ramlila, Bharatanatyam and others, this astronomic order is visible not in architecture but in the actor and stage behavior. The space is consecrated, yet it remains porous. The actor does not enter into a role, he enters a state of being. We call it bhava, state of being. Till then. So, his training is ritual in discipline and his art a form of meditation. Scenography in such performances does not create illusion. It cannot create illusion in this kind of performances. तो चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा. It cannot create illusion of forest, palace, rivers, roads. Instead, it awakens awareness in the spectator's mind, inviting them to visualize through the inner eye. The lamp's flame becomes the fire. It becomes the first scenographic act, making the presence of consciousness itself. Lights, it will reveal first. So, pahla consciousness lights are not through set. Because what you see through the light, it may be a lamp, it may be a candle, it may be a spotlight, or it may be in the daylight. The revelation starts with lights. So in scenography, Indian scenography, it has given more first importance to the lights, not to the space. Design comes second. In this mode, theatre ceases to be representation and becomes a re-enactment of cosmic order. The scenographer does not design but aligns, measuring proportion not by geometry but by resonance, with body, breath, direction, time and space. Modern Indian masters have reinterpreted this astronomic principle in contemporary theatre. ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में काम नहीं हुआ है, आइडेंटिफाई नहीं किया है हम लोगों ने. मैंने सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है. कुछ नया नहीं है, हमारे यहाँ पर सदियों से चली आ रही है. हमारी फोक तो है ही, हमारे कंटेम्परेरी थिएटर डायरेक्टर्स ने भी इसका बहुत काम किया है. मेरे पांच गुरु हैं, पांचों की यहाँ पर रखने की कोशिश की.
Modern Indian masters such as Ratnathiyam begins with silence. If you have seen his plays, silence play an important role in Thiyam's production. Silence, what happens? Silence cleans the perception before things appear. Bansi Kaur reminds us that space must be listened before it is seen. Sound play an important role in Bansi Kaur's production. आज मैडम सुबह एक्सरसाइज करवा रही थी, थोड़ा सा हम लोग आवाज का होगा, जो लोग क्लास में हमारी बात बैठे हुए स्कूल में पढ़ते हैं. So K. Padikar, Kavam Narayan Padikar from Kerala believes that the actor's entry sanctifies the ground more than any design would do. To this lineage belong two others who shaped my understanding of scenography through sound and rhythm. Habib Kandir opened my perception of space as an atmosphere. If you have seen his productions like Charanda Show, Mati Gadi, or any one of his productions, you can see his chorus of folk singers through raw vocal energy and unison of breath creates an expanse of aboriginal landscape of Chhattisgarh. उनकी स्पीच उसी गाने में आपको उस लैंडस्केप तक ले जाता है, आपको फ्लोर में दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती. फ्लोर में दिखाएंगे शायद वो उसका एस्थेटिक्स कम हो जाएगा. The empty stage becomes vast, emancipated by resonance. Habib Sahab taught us that the true scenography of India lies not in scene, but in the sun. कैसे हम उसको सुनने से ज्यादा कैसे उसको गा पाते हैं उस स्पेस को? Where voice constructs horizon landscapes. Karan, Vini Karan, my Guru Vadabhi, whom I have worked for almost more than 20 years. So Baba Karan similarly revealed the musicality of the space. उनको भी शायद नहीं पता होगा वो क्या मुझे देखेंगे, क्योंकि जब वो चले गए तब थोड़ा बहुत समझने की हमारी समझ पड़ी. तो उस समय हम मालूम नहीं था, बट अंधे की तरह काम करते गए तो तभी थोड़ा सा बाद में एनालिटिकली हम उसको सोचने की. तो मैंने 4 लाइन उनको बांधने की कोशिश की है. Baba Karan reveals the musicality of space. Its sound plan. You always used to say, I'm giving a sound plan. Its sound plan carved invisible architecture on the space. Horizontal, vertical, diagonal, zigzag, curve, through percussion and rhythm. उनकी ऐसा लग रहा है कोई एकदम से ऐसा उठ जाता है. वो he has used that in this place. After jump करता है verticality, space automatic ऊपर के lift हो जाता है. Slow उसमें glide भी करना है, space का horizontal expansion होता है. So Karan in his productions in Skandok and Andher Nagari, one could feel the air. इसके अंदर में जो air है, ऐसा लगेगा कि ऐसे एयर को काट रहे हैं. कोई हाथोड़ी में या सारी कोई चीजन में आप कटिंग कर रहे हैं एयर को, ताकि ठीक हो जाए. बर्फ को जैसे हम काटते हैं, ऐसे वो एयर को काटते थे थ्रू साउंड, पेनिट्रेटिंग थ्रू द एयर. उनकी ताल और लय और उसमें जो एक्टर्स की स्पीच सब मिलकर एक सिनेमेटोग्राफी क्रिएट कर रहे हैं. उसको वर्ल्ड का कोई भी वेस्टर्न सिनेमेटोग्राफर शायद ना समझ पाए, बट इंडियंस कैन अंडरस्टैंड. So Karan's theatre showed how sound can be sculpted. Sound can sculpt space, making unseen visibility, making unseen vibrate into the form. Together, these 5 masters reminded me that Indian scenography is not visual design, but a discipline of attunement to bring together sound together and vibrations. The Ashramik vision refined theatre as conscious ecology, restoring unity between art and awareness. Here, emptiness is not absence, it's potential. Every action springs from resistance, every color from calmness, to design is to dwell. अगर ऐसे नाटक में ऐसे स्पेस को डिजाइन करना होगा तो आपको वहां रहना होगा. फिजिकली रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूं. आप
आपको वहां रहना ही होगा, अदरवाइज यू कैनॉट क्रिएट। यू हैव टू dwell and to perform is to participate in that cosmic order. Second is Patra Bhava, a temporary dwelling. In Indian vision of performance, the actor is not a processor of meaning, but its carrier. Actor carries the meaning, but both generate the meaning. He holds and religious emotions, gestures, and narratives as a vessel holds water, without its relationship with the content. This is called Patra Bhava, the consciousness of being a vessel, where body, mind, and material become transparent, allowing energy to pass through unregistered. The Natyashastra describes the performer as both instrument and embodiment. हम खुद अपनी बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड खुद एम्बडी कर रहे हैं उसको। तो मतलब यू आर द एक्टर, यू आर द परफॉर्मर, यू आर द डिजाइन, यू आर एवरीथिंग। सो एक्टर सेंट्रिक थिएटर है हमारा, वन who becomes the vessel of bhava yet never consume it. To experience rasa, the actor must cultivate emptiness. अंदर से खाली होना बहुत जरूरी है। भर के रहेगा तो वो नहीं कर पाएगा उसको। कंप्लीट क्लीनलीनेस, इसलिए योगिक एक्सरसाइजेस हमारे नाट्यशास्त्र में भी है और हमारे थिएटर ट्रेनिंग में भी, इंडियन ट्रेनिंग में बहुत योगिक एक्सरसाइजेस होती है। ग्रोटोस्की यहाँ से लेके चले गए, सब जितने आए हैं यहीं से लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं। So to experience rasa, the actor must cultivate emptiness, the inner stillness that allows emotion to flow without distortion. अगर हमको बहुत एक रौद्र रस पैदा करना है या कुछ इस तरीके से भाव में उतार चढ़ाव है, बहुत टेंशन है नाटक, हमारे जब मतलब लोग कर रहे हैं, टेंशन भयंकर है, मर्डर करने को जा रहा है, बट अंदर स्थिर है, क्योंकि कैरेक्टर उस हमारे अंदर जो है वो रस को दिखा रहा है, मैं नहीं कर रहा। अगर आप स्थिर नहीं रहेंगे, यू कैन नॉट होल्ड इट, फिर आप खुद टूट जाओ। So when to experience rasa, actor must cultivate emptiness, the inner stillness that allows emotion to flow without distortion. This emptiness is not void of readiness. It prepared to receive. It prepared to receive. Thus, Patra is not passive. It's a resonator. When this consciousness extends beyond the actor, every element of scenography participates in it with the same power. The cloth that flutters on the कपड़ा है जो हिल रहा है, the light that moves, जब आप लैंप में चल रहे हैं उसमें फ्लिकरिंग होती है, आपकी कॉस्ट आप खड़े होने में लगेगा कि आप मूव कर रहे हैं, क्लॉथ में मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। So the drum beat that fades to sound, धीरे धीरे फेड कर रहा है, all are vessels of momentarily, nothing returns, nothing exists. Here Patra Bhava meets the wisdom of Bhagavad Gita. भगवद गीता का हमारा जो श्लोक है, निष्काम कर्म, उसके साथ जोड़ जाता है। The performers act resembles निष्काम कर्म yoga, action without attachment. Each gesture arises from necessity, performs its dharma and deserves. The scenographic object too, once fulfill its purpose, releases back to the continuum. वो वापस चला जाता है, जैसे मैंने पहले कहा था आकाश में सब आगे होते हैं फिर चले जाते हैं। This is tenderness in this. There is tenderness in this renunciation, the spiritual intimacy that echoes the Sakshi Bhava in itself. The performer participates in creation not through command but through companionship. The actor does not dominate the space; he compensates it. The lamp, the sound, the fabric, they become companion of the play, not the instrument to control the play. To work in Patra Bhava is to act without ego and love, and without ego and love without position. The stage is a network of temporary holders, each observing and releasing rhythm. This is the ecology of Indian scenography. Every object breathes through its impermanence. Actor, object, and content. To practice, in practicing, the transformation happens in both acting and design. The actor's task is not to display ability, but to empty himself to that power. The objects
task जो lion जो हम use करते हैं objects properties mask costumes. The task is not to symbolize but to participate in it. A mask once worn becomes animate. The mask is a dead object. When an actor wears it, gets life into it. So it performs now. Then we remove it and again comes back. वो अपनी फिर उसको मृत हो जाता है. The mask once worn becomes animate, once removed returns to stillness. A piece of cloth can change its identity from a mountain to a river to a sky, not by illusion but by contextual demand. मान लीजिए कपड़ा पड़िए, आप उसको उठा के अग्नि की तरह आपको दिखाई पड़ रहा है, फिर उसका बाद वो सांप भी बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, वो करने पे गलतियां की तरह भी आ सकता है. So उसमें कैरेक्टर उसमें नहीं होता, कैरेक्टर contextual होती है. Getting your point? So everything is real only in its own time and must be released to the emptiness. I have often witnessed this transience when an actor transforms an object into symbolic images. In my own production of Tumhara Vincent, I have done a production it's about the life of Vincent van Gogh, the painter. It's not exactly the life, it was not a biographical production. It was an expression of some lines, colors, textures. Paintings can come, the characters of the paintings, they come and talk and back to the paintings. Again become still. So that experiment हुआ किया था इसके ऊपर. So in that play, there are some frames. I'll show you some photographs. These frames are made of conduit pipes, जो पानी की पाइप होते हैं, पाइप की बनी है थी, of various sizes. These frames become paintings, windows, invisible thresholds. When an actor raises one before his face and gazes through it, ऐसे नहीं कि आप ऐसे देखता है, it becomes a self-portrait. The space divided into two, one is inner space and one is outer space. The self-portrait in air. Later, when the same frames were aligned from largest to the smallest, they formed a tunnel leading into the coal mines of Borinage. In the early days, Van Gogh was working inside a coal mine in Belgium. So, both उसके अंदर जाने का underworld जाने का रास्ता. The underworld of Vincent's own desire and desire. And there are other images too. एक छोटा सा object. There are many roads. I can show you some slides of other productions also. You can see. See these frames, they become actors, portraits, and in other scenes also these self-portrait. A painting. She's watching the painting. See how a landscape is created. Because sunflower is one important life. पढ़ाओ विंसेंट की लाइफ में आया है. कोल माइंस का सीन उसी की वो बिकम स्मॉल खांचे जिसके अंदर वो एक्टर्स जैसे काट रहा है को काट रहा है. So this is another same way of painting design. This is another. I didn't use any shapes except this only one of the frames. They become snakes, they become the doors, they become the windows, and two characters they are standing. One is inside the house, Rani. If you have read the play, the central character Rani is inside the house and Pururabha, the old lady, is outside. But they are the same space divided. So that is angle threshold. So another part in the snake and the lady. This is another one that I did about Lioness, about Draupadi's revenge. This is small play in English. I used puppets, and these puppets, they मुकुट लगा तो कैरेक्टर बदल दिया. थोड़ा सा कुछ और कॉस्ट्यूम चेंज, वही on spot actors, they change into different characters. Now they are playing the role of Panchpanda. And ये जो actors who are handling it, they are also doing the role. Here, Draupadi with one talking to a character, not a godhead,
talking to one character. I just show you one. What is the आगे बढ़ाना है स्लाइड लंबा है बाहर दिखाई देता है I want to show you in between some. पूरा देखने को मिलता है। Wait for me. Otherwise, no, I don't know how to go. Here, I just it's a sound without the sound. आपने देखा होगा कि एक क्लॉथ है, there is a red cloth that becomes blood of दुशासन, जिसको वो नहाती है, and वही क्लॉथ वो उसका अपना अनर बन जाती है। मतलब पहले से that in this particular एक ही सिंगल को उसको when it flows on his body से बड़ी बंधन करती है, and see where that wrap around it like his whole other has been returned back. So like for example in this photograph. So one object used in not only two ways, there are many, hundreds of ways it can be used. Okay. Here in this situation, scenography breathes because the actors and objects share the same vessel of consciousness, each lending life, each letting go. This philosophy also reshaped the director's perception. The director, like a potter, must know the porosity of the clay, the balance between form and emptiness, to overfill it, to break it, to leave it open, is to invite resonance. Indian theatre survives by these delicate balances between possession and release, between precision and surrender. Patra Bhava, ethics of hearing, release and renewal. Patra Bhava unites philosophy and practice into one gesture. No character, image or design is permanent. All are temporary configurations of consciousness. The actor, scenographers, and space are vessel within the greater vessel of creation. To act is to receive, to design is to channelize that, to conclude it, to let it go. In this awareness lies the spiritual ethics of Indian scenography, the beauty of what passes through. Sound and scenography. Scenic and sonic logic. Sound in Indian theatre is not accompaniment, it's one of the principal architects. Whereas Western scenography often breathes with light. Western scenography talks of lights, colors, textures, and feels the space, light, design. Indian imagination begins with impulse, with vibration, and allows form to grow around it. Sound marks the horizon.
cuts the air into rooms and makes distance palpable. I was talking that previously. I learned it. I learned the magic of sound, creating visuals through Baba Karan, whose rehearsals were the orchestra of rhythm and silence. To what he would clap wooden blocks to set tempo, begin each sound with a melodic alarm and attune actors' movement to the dholak beat. From this I learned to see sound through ears, to feel rhythm and architecture. Karan showed us that space could not be cut. Space could be cut, expanded and tightened through the vibrations. Bansi Kaur reveals sound as cartography. His earliest memory came from the morning calls of the vegetable vendors in Kashmir Valley. We are talking something like that. The terrace settlements, each voice adjusted the pitch and volume precisely to reach a house at a particular height. Madam was talking that yesterday. In Kashmir Valley, the vegetable vendors in the early morning, they raise their voice according to the level of the houses. So different terrains में hills से अलग-अलग layers में houses है, तो किस घर को बुला रहे हैं, तो आवाज से distance को नापते हैं and call see mapping the space through sound. For Bansi Kaur, it was his first scenography. In theatre, the chorus places and the upstage is not music but architecture. It's very interesting to understand. बंसीलाल प्रोडक्शंस में म्यूजिशियंस जहाँ बैठते हैं, वो सिर्फ एक वहाँ से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, वो डिस्टेंस भी इतना ही काम करता है. So the chorus placed in the upstage is not only music but also architecture. Pitches define depth, intensity shape emotional rhythm. For him, one can hear the landscape before one sees it on the space. On the contrary, Ratan Thiyam, another one veteran legend of Indian theatre, he watched it completely opposite way than Kansina. Fortunately, I have long associations with these people, so I could try to identify a little from these people. Ratan Thiyam used opposite method, silence and scaffolding, where sound builds, silence holds. His long pauses and sudden percussive eruption measures the space by absence. Bansi Kaur के play अगर आपने देखा तो बहुत धूम धड़ाक के रिदम जाएगा, then complete silence for a longer period of time, and that silence creates scenography in the mind's eye. वो space को hold कर लेता है, as much as जैसे presence hold करता है, शायद ना कर पाए इतना presence में जो silent absent करता है. As we experience in his plays such as Macbeth, King of Black Chamber, etc., etc. In his theatre, a held silence becomes tactile. Silence को hold किया है, ऐसा लगेगा आप उसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो silence को. It thickens the air. ऐसा लगता है कि दादा ने रतन ने मुझे एक बार कहा था, ऐसे ही मजाक में कहा कि पानी का घड़ा लेके आओ, तो पानी का घड़ा तो नहीं मिला, एक और ऐसे बर्तन दिला, तो इसको पानी में भर दो. So I filled that. And उसको होल्ड करके यहाँ से अंदर जाओ, एक ड्रॉप पानी नहीं गिरना चाहिए, एक ड्रॉप पानी नहीं गिरेगा. एंड उसी स्पेस को जब हम ऐसे ही कंजर जा रहे थे, अब टोटल स्पेस ऐसे कंजर हो गया कि जगह पे किसी मर गया, ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल ऐसे करके अंदर चल रहा था. स्पेस अपने आप में ऐसे गुड ब्लॉक बन गया. आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे, चाय के कप लेके जाते हैं, सो स्पेस कभी एक्सपैंड हो जाता है, कभी सिमट जाता है, कभी थिक हो जाता है, कभी एयर की तरह इन हो जाता है. गिरीश कर्नाड ने अपनी प्ले में ये बहुत अच्छी तरह से यूज किया है, जो बाद में समझ में आया नागमंडल में, जहां पर रानी की एक लंबी स्पीच है. वो कहते हैं जब साहब होते हैं मेरे कान, सारी संवेदनाएं कान में आ जाती है, झिंगुरों की आवाज को सुनती हूँ, गाय की गले की घंटियां सुनती हूँ, फूल जैस्माइन फ्लावर की सुगंध मेरे कान, दिन भर सुन नहीं आ पाई सब चीजें. रात साहब होते हैं कि उसका हस्बैंड उसका लवर आएगा, so she is waiting for the footstep that comes from outside. Invisible scenography. Believe me, it's completely scenography. I can get to anybody in the world in this context. So,
practitioners such as Cole, Karan, Thiam made me aware of human voice as a spatial instrument. Pitch opens the distance, and now I talked about that. Timber condenses it, and collective singing can pull the gravity towards the source. In their theatre, architecture was audible before it was visible. These stalwarts remind us that to design is to listen first, and to listen is to draw and create the space. Composing a scenic and sonic field is a kind of choreography. Sound sources are distributed by defining their density and behavior. One must decide where sound is born, kahan se aa raha hai, where it fades out, and whether it moves or stays anchored. Such choices guide the audience attention. A single harmonium playing at the upstage right, imagine the harmonium is playing on that side, can bring an oral anchor. वो हमारे कान को वहीं तक ले जाता है. The audience gaze drifted towards that. फिर आँख जाती है वहाँ. तो ये distance को हमने नाप लिया आँखों में sound के थ्रू, and we realize the visual cues to that in that direction, letting the sound becomes the sight. The sonic and scenic approach domesticates, democratizes the stage. When chorus becomes the horizon and percussion becomes the architecture, audience imagine more with the less. कुछ नहीं, audience imagination की सारी चीज शुरू हो जाता है, देखना शुरू होता है. This alignment with the Indian economy of suggestion. This is an alignment with the Indian economy. We call that is suggestion. I call it anukalpa, alternative ideas over anurupa, imitation. It invites perception. The spectator completes the space through memory and perception. Next comes indicative space. This is the core of this entire Indian cinematography. Indicative space is not limited but revelations. Object, gesture, light belong to a state of becoming. Their meaning is invited but not fixed. That is not merely design method but a metaphysical stance. The stage cultivates openness rather than enclosure. Rooted in anukalpa, imagining through resemblance, the Indian stage indicates the perception where the actor, object and space offer suggestions that the audience completes through imagination. The performer indicates, viewers realize. This mutual exchange forms the ethics of Indian cinematography, which I call from the stage space to audience mind space. Stage space is very limited, mind space is limitless. So, the Indian designers who work in the audience mind, not in this small space. तो वहाँ पर बहुत कुछ अपने आप में देखेगा. So designers, not only we are the designers, audience are the designers. Bharata noted Bharat's notion of dhvani, meaning through resonance and back as a spatial analog here. The form is partial, half spoken, half silent, and imagination bridges the rest. Hence, cinematography becomes less about the representation and more about the condition that allow images to arise in the mind. I have experienced this most clearly in the productions of Nagamandala. I have shown you the photographs. While only a circle of light, an earthen lamp, a red orderly the actor used that summoned multiple words, the cloud moves as a serpent. The same cloud becomes a flame and becomes her destiny. The prop did not represent, it behaved. Meaning emerged because perception of the actor and the audience changes. The cloth becomes fire when the actor handles it with anger. It could be, it coiled into a serpent when the actor's body curved over it. Cinematography here is a conversation between human impulse and the impulse of the material. दोनों का मिलन में डेवलप होता है.
In Abhiyan Shakuntala, one of my another production, Shakuntala, not Abhiyan Shakuntala, gestures doesn't come, does the same work. Few actors gestures does the same work. A deer is never shown when Bregamani comes में, only a hasta mudra. आज इसीलिए मैंने पूछा था आपको, this singhasta mudra evokes its presence. The audience does not see the animal, but sense it through a rhythm and association. The body, like a cloth, becomes a vessel of becoming. Such indication demands economy. Performer acts with the body. Performers acts with the audience, not for them. हम नाटक उनके लिए नहीं कर रहे, उनके साथ कर रहे हैं. The director must practice self-control, reveal only that much enough to ignite the perception of the actors and viewers. Each withheld elements become an apparatus through which awareness enters. The spectators become co-creator, completing the image with memory and imagination. This alters the design priorities. Impermanency is favored over permanency. Experience over fixed form. In rehearsal, a thin slice of light on a fabric cloth. एक कपड़े के ऊपर हल्का सा कलर लाइट आ रहा हो और रिहर्सल्स में एक्सपीरियंस का in rehearsal a thin slice of light on a fabric edge can awaken the entire landscape. बैंगलोर की इसमें हमने देखा एक लाइट कपड़े के ऊपर गिरता है उसके फोर्स से वेव्स के एक्टिवेट्स नहीं है ये क्रिएट होता है जैसे धान की खेत में या कोई गेहूं की खेत में आवाज उठ जाता है वेव्स क्रिएट होता है हल्का सा ऐसा अपने आप में सब देख लेगा आपको दिखाएगा अब जब ultimately indicative space and spectators imagination how finally audience imagination ultimately indicative space completes the art of Indian scenographic thoughts from astronomic discipline to Pattabhav, from sonic structures to the threshold of suggestions. Theatre becomes a spiritual practice, a field where image appears by shared intention, actor, object, light, spectator, and instruments in an orchestration of revelation, each indicating the other, each dissolving into a greater wholeness. From this ground arises the triading of eyes. मैं बोल रहा था triading of eye, the main image, imagination, and interpretation. In the indicative act, image is born. Image born out of the indication in the mind. Imagination stared it. उसको stare करता है imagination to create an interpretation which is shared among the audience. That is the meaning. Indicative space then is not merely a staging technique, it's a grammar of Indian scenography. Indicative space to image, image to imagination, imagination to interpretation, and from interpretation to Rasa. In the Indic understanding of theatre, seeing is creation. Vision is not passive reception, but active participation. A process through which awareness recognizes itself. What the Western tradition calls representation, in Indian thought it is called revelation. The unfolding of what already rests within the consciousness. Just उसको खुले देना. It is already there. This unfolding takes place through the triading rhythm of image, imagination, and interpretation. Three pulsations of the same awareness. Together they form the architecture of Indian scenography. A grammar where perception becomes understanding and understanding becomes an experience. The image is the first threshold. एक दरवाजा है, हमने इंडिकेट किया वो दरवाजे बाहर ऑडियंस चला जाता है, सोचने लगता है, उसको दिखाई पड़ता है कुछ, जैसे मैंने कहा डियर है, हमने तो डियर नहीं किया. I tell you very interesting experience in my American experience. I did the same play Shakuntala with Grant, Michigan Central Michigan University, students of theatre arts. I told them I did 5 plays.
So who will become the deer? तो लड़के 5 लड़के जैसे लड़कियां ज्यादातर लड़कियां होते हैं सब 8 में लड़के कम होते हैं. So these girls they said that I will do and thus I selected 5 only. And okay, बोले वाले dialogue I said that's not dialogue. So what we do, because the European American theatre is text centric. Text, it's not performance based. हमारे तो हर चीज परफॉर्मेंस से रिलेटेड है. परफॉर्मेंस नहीं होगा इट्स अ सो व्हेन यू परफॉर्मेटिव यू हैव टू परफॉर्म. तो वो समझ में नहीं आया. तो फर्स्ट ईयर सेकंड स्टूडेंट को देखना क्या. नेक्स्ट डे व्हाट आई सॉ इन द रिहर्सल, beautiful deer costumes, mass, properties, costumes they wear and they stand and they are very happy to become Indian. For the first time they are not giving any dialogue. They will improvise. So improvisation is a new technique for them. American European men have improvised नहीं होगा. Because such realistic play, very hardcore realism में believe. So I said remove it. Why? Sir, we whole night we toil to find these costumes from our wardrobe and some they stitch it. रात भर लग के सिलाई. Very sincere students. हमारे पास नहीं. So मैंने कहा remove it. Who told you to be like that? Because you are going to be a tree after this scene, you immediately will transform a tree and will become a tree. Yes, he will become tree. Sir, how can it become tree? And then the tree will come. There are some lines for the trees. So the one tree is one creeper is talking to another creeper about something. तो believe me, उस रिहर्सल को देखने के लिए उन्होंने अपने फ्रेंड्स बुला लिए. दूसरे डिपार्टमेंट के लड़के लड़कियां आके देखने के. So it became a tamasha. So this I just share one experience how this our concept has become very innovative for them. तो बेचारों ने इतनी मेहनत किया था हीरोइन मास करना चाहता था. सिर्फ एक हैंड gesture again enough. So this imagination, this image is the first threshold. It is not an object but an occurrence. The condensation of invisible energy into visible rhythm. It may arise as a shaft of light. लाइट से भी वो क्रिएट हो सकता है. एक टोन ऑफ साउंड, एक साउंड से भी वो क्रिएट हो सकता है वो इमेज. आई टेल यू व्हाट, बिकॉज़ चीजें बहुत बड़ी है और हमारी लाइफ में बहुत लोगों का काम करने का होती है. बाबा करम के साथ हमने किया था मंजरी अपेरा में. सॉरी बाबूजी एक प्ले विमर्श वैभव ने लिखा. बाबूजी एक प्ले एक नौटंकी एक्टर, वन नौटंकी एक्टर. It's about the life of a notable actor. So he got married, he got 3 children, and these children become old. And after 10-20 years, these children they took over the company. And father kar diye, hata diye, bhara diye. So what happened? That is the in one music 20 years passed. How? One song and there is a thump and a sound. उसके 3 बच्चे हुए. एक बच्चा दूसरी थम 3 देन चौथा स्टांजा एक लाइन दो लाइन एक कपलेट से. चौथा स्टांजा में पढ़ाई का जब 5th स्टांजा में 6th स्टांजा में मैरिज का मंत्रोच्चार हो रहा है. 6th स्टांजा में उनके बच्चे हुए. In one song went 3 generations. एक ने शादी किया, बच्चे हुआ, फिर उसका बच्चा हुआ. तो एक हमने मजाक में कहा जिसे बोला मैंने दूसरा गाना बनाने से पे खत्म करते चलते. सो ये तो हमारी पूरी नाट्यशास्त्र में तो यही चीज है कि हमें पूरा नैरेटिव हमारा ओवरऑल ट्रेडिशंस में. सो द इंडिक इमेजिनेशन therefore resists fixation. It invites attention, then dissolves. The purpose is not to illustrate but to awaken. Second, imagination. First image, second imagination. When the visual pause, when the visibility pauses from the look time, imagination starts. That's kalpana. It is not invention but refinement, the power of the mind to complete what perception only inside. तो परसेप्शन या हमारी इमेज में जो हमने देखा था, जो हिट्स किया था, उस हिट को रिफाइनमेंट देता है कल्पना में. So in the Indic aesthetic sense, कल्पना is born from stillness. जब शांत होता है ब्रेन, कल्पना डेवलप करती है. Not in this
haphazard mind में नहीं होगा, not from fantasy. ऐसे fantasy से नहीं होता. It carries the contemplative strength to extend from form into essence. Form जो स्थूल रूप है, form है जो स्थूल रूप है, उसको सूक्ष्म रूप में बदलता है. तो उसका essence निचोड़ निकालता है. When Shakuntala lifts her hand in the Singhastha Mudra, the deer does not appear, yet it is fully perceived by the weaver. Image आप देख सकते हैं. When the red already in Nagamandal coils into movement, we feel the pulse of the serpent. This transformation occurs in our inner eyes, where imagination completes the art of reality. It is here that scenography leaves the world of material and enters into the realm of perception. Third is interpretation. When image and imagination meets, interpretation arises, not as intellectual analysis, but as an anubhuti, experience, lived realization. It is the flowering of the perception, the arising of rasa. Meaning ceases to be a concept and begins and becomes an experience. The interpretation is collective, not solitarity. It happens within the performer, within the spectator, and with the space itself as a vibration passing through all three. In that moment, theatre transcends its structure. The stage becomes consciousness, perceiving itself. Interpretation is thus the consumption of the trident journey. The image awakens, imagination breathes into it, interpretation releases that fragrance into awareness. What remains is the silence, not empty, but fulfillment with imagination. Together they form a circle through which seeing depends into knowing. The triadic of eyes thus defined in Indian scenography. It's a discipline of justice. When the imagination is awakened, when the image is awakened, imagination flows and interpretation moves into shared silence. Theatre ceases to represent life and begins to illuminate. This is the final discovery of my journey into Indian scenography. It's not the visual arrangement, but the spiritual geometry, the architecture of emptiness. Topic 2.